हे गाइस एंड व्हाट इज़ अप, सो वेलकम टू माय स्क्रीन। तो आज हम करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग का पार्ट 1। तो मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ना स्टार्ट की है विच इज़ अ योगीज़ गाइड टू जॉय बाय सदगुरु, एंड दिस बुक वॉज रिकमेंडेड टू मी बाय माई फ्रेंड्स एंड श्रुत्य। एंड उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि प्लीज़ ये वाली बुक पढ़, ये वाली बुक पढ़। ऑल्दो आई वॉज ऑल्सो रीडिंग दिस अनदर नॉवल विच इज़ फ्रैंकेनस्टीन, बट he was like कि अभी पढ़, so I was like ठीक है fine, I'll read like 10 pages every day before sleeping. So yeah, so मैंने आज ही बुक पढ़ना स्टार्ट की एंड मैंने इसके पहले 13 पेजेस पढ़े। एंड अभी तक मैंने जितना पढ़ा और इस बुक के बारे में जाना, लाइक आई एम enthralled बिकॉज सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं दे आर समथिंग लाइक आई पर्सनली डोंट लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स। लाइक मुझे ऐसा लगता है दे आर नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज मुझे आई थिंक कि मेरी ना एक आइडियोलॉजी थी कि जब कभी भी मैं सेल्फ हेल्प बुक पढ़ती हूँ तो एक ही फैक्ट होता है जिसको जो ऑथर है वो लिखता है बाय मोल्डिंग इट इन लाइक 1,000 times, बट द मैसेज रिमेन सेम्स एंड आई एम लाइक आई गेट very easily tired by reading those same, although the sentences are different, but at the end the meaning is same. So I'm like, no, I can't read it. So I also started this book, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, but I could not complete that novel too because I realized that जो मेरी ये वाली books हैं, they are not my cup of tea, as I told you earlier. But since I've started this book, A Yogi's Guide to Joy, so I'll just shortly commence with द पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी टेलिंग। मैंने आज पहले 13 पेजेस पढ़े एंड मैं उनके बारे में बताऊँगी। लाइक आई नॉट गिव यू लाइक वेरी डिटेल्स बिकॉज इफ़ समबडी ऑफ यू just they just want to have a gist of it and not the complete idea, तो मैं वो वाली ऑडियंस का भी बहुत ध्यान रखने वाली हूँ। सो या, तो बेसिकली जो बुक की ओपनिंग है इट्स वेरी आई मस्ट से इट्स बेसिक, बट इट्स बेसिक येट पावरफुल आई वुड से, बिकॉज बहुत ही सुंदर एनालॉजी यूज़ की गई है लाइफ के बारे में समझाने की, विच इज़ लाइक ऑन वेरी वास्ट टर्म्स पे। तो वो आइडिया मुझे बहुत एंथ्रॉलिंग लगा विच लिटरली ग्रैब्ड माई अटेंशन। अदरवाइज़ मेरा जो स्पैन होता है, रीडिंग स्पैन फॉर सच बुक्स इज़ लाइक वेरी लिटिल। तो या, तो इट ऑल स्टार्टेड कि वो एनालॉजी वगैरह हुई एंड उसके बाद उन्होंने दे हैव फोकस्ड लाइक ऑन 4 मेन पॉइंट्स कि वेयर लाइक सोसाइटी में और रादर कोई भी लोग ले लो, इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, बट a large number of people hold this belief or they try to perpetuate some things for life, like lifelong के लिए वो करे जा रहे हैं, knowing for a fact that these are simply myths and ऐसा होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। सॉरी फॉर माई कैमरा इंटरप्शन। सो उन्होंने बहुत ही 4 चीज़ों पे फोकस किया गया है जिसमें से मुझे अभी 2 बहुत अच्छे से याद हैं और मेरे को समझ आई। पहली तो ये थी कि बी इन द मोमेंट। तो although we keep on saying that be in the moment guys, be in the moment, but we know that how much baggage we do carry of our past and how much we are worried about the future. So उसको बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। अब मैं ये पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगी फॉर दोज पीपल बिकॉज आई एम स्पेयरिंग दोज पीपल जिनको ये बुक एक्चुअल में पढ़नी होगी। एंड नेक्स्ट इज़ उन्होंने बोला है बीइंग पॉजिटिव। सो ये मेरे को अभी तक का बेस्ट लगा एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दीज 13 पेजेस सो फार, जो मेरे दिमाग में हमेशा I will I have imbibed so far, which was being positive. So Sadhguru has said that being positive is a very good thing, and for some extent in life it does bring changes like for the good, but at the same time when you're being positive you are simply amputating one particular part of reality which is making things lopsided. Like, wow, this is such a beautiful idea. Nobody could even think of it the way he has thought of it and has written so beautifully, expressed so beautifully, like very powerfully he has written this, that if you amputate one particular side of the reality, especially the one when you are facing your lows, then that will make your life lopsided, which is it will make your life unbalanced, which in reality it is not supposed to be. And then
I also read this very beautiful line which I would like to add, which will definitely motivate you more to read this book. So you have to wait. So yeah, I came back with the complete line. So it goes like, when you completely are in a situation or in a problem, and whenever you want to cut off that psychological drama from your life, or any, what was it? Uh, and whenever you are unable to process real time information, and whenever you want to cut down the psychological drama, or you are not able to bear it off or something like that, so you end up seizing your thoughts on being like stress positive, yeah, be positive or something like that, which acts as a tranquilizer. And initially it does fills your life with new confidence and positivity, but it just acts for a very shorter period of time, and then it disappears. And that's where this line comes, that when you amputate one side of the reality, it definitely becomes very lopsided, very unbalanced, very uneven. So yeah, this was so beautiful thing. And yeah, and all these ideologies, these are, they continue to be perpetuated, like, for no reason, because just because they are just being you know uh, very very strongly felt by the people. So yeah, people can't just ignore the emotions and something. So this was a very beautiful line. Yeah. And and then I learned some very very beautiful words, and I also wrote their meanings. Like, yeah, pencil silicate might not be visible, but I learned a couple of words, so I'm happy. Yeah. Yeah, I also learned this word. Like, it's a combination of two words, which is like singularly impressed, unimpressed, or singularly impressed or something. So singularly stands for completely, and unimpressed, like when you're zero impressed by someone. So this adds a new word for dictionary for you to use. Then I also learned this word thwarted. Thwarted is to, like, to be stopped or prevented from doing something. And yeah, अभी तक मैंने बस इतना पढ़ा, and that was it, guys. I enjoyed reading the first 13 pages of the book, and I hope if you are really motivated by reading this book, I will definitely share the link in my description box. Then do get this book and start reading, because I think, though it will not change you or transform you completely, but little changes might bring transformation at some point of time, which will make our inner selves happy. So yeah, with this, signing off until next time. Bye bye.